हर ख़बर अव्हां हेडलाइन न्यूज इज brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी न्यूज़ में भली कार ऐं आऊं आहियां पिरिया गुल। आऊं आहियां रुखसार पंवर। सब खां पहिरीं नज़र हेडलाइंस ते। अदालत वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह खे मंशियात हथ अचण वारे केस मां बरी करे छॾियो। शरीक जवाबदारनि खे बि बरी करण जो हुकुम। केस जा बि गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ ऐं इंस्पेक्टर एहसान राणा सनाउल्लाह खां मंशियात हथ करण वारे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। गवाहनि जो चवणु आहे त असांजे साम्हूं का बि मंशियात हथ नाहे आई। घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह खे 1 जुलाई 2019 ते मंशियात हथ अचण जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कयो वियो हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां राणा सनाउल्लाह जे केस मां बरी थियण ते ख़ुशी जो इज़हार। शहबाज शरीफ चयो आहे त अल्लाह जो शुक्र आहे जंहिं बेगुनाह राणा सनाउल्लाह खे इंसाफ़ ॾिनो। राणा सनाउल्लाह ते मंशियात जो कूड़ो केस सियासी इंतकाम जो बदतरीन मिसाल आहे। राणा सनाउल्लाह सियासी इंतकाम बावजूद शिकायत जो हिकु लफ़्ज़ बि न चयो। मौजूदा वक़्त सच कूड़ बेगुनाह ऐं गुनहगारनि में वाज़े लकीर कढी छॾी आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध में कंहिं बि नए सूबे जी ॻाल्हि कई त उन जो बुरो असर थींदो। मुल्क में वधीक सूबा ठाहिण लाइ सिंध बाबति केर बि न सोचे, रुगो सराइकी सूबे जी ॻाल्हि थी रही आहे। ॿियनि सूबनि में बि इंतज़ामी यूनिट ठही सघनि था। ठटे जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त मुल्क में आम चूंडूं पंहिंजे मुक़रर वक़्त ते ई थींदियूं। इमरान खान ऐं संदसि टोले जूं कोशिशूं नाकाम थींदियूं। बोर्ड सबब सिंध में तमाम घणो नुक़सान थियो। 21 लख घरनि जी तामीर लाइ आलमी बैंक ऐं ॿियनि इदारनि खां मदद वठी रहिया आहियूं। नवाज़ लीग सरबराह ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ चयो आहे त पुट खां पघार न वठण ते मूंखे नाअहल कयो वियो। असां उहे माण्हू आहियूं जिन पाकिस्तान खे एटमी ताक़त बणायो। बचे जी ज़बान ते तोशाखाना चोरी जो किस्सो आहे। ही माण्हू दुनिया में मुल्क जी बदनामी जो सबब आहिनि। लंडन में ॻाल्हाईंदे अॻूणे नवाज़ शरीफ वधीक चयो आहे त शहबाज शरीफ मथां बेबुनियाद इल्ज़ाम लॻाया विया। बर्तानिया जी सभ खां वॾी अख़बार शहबाज शरीफ खां माफ़ी वठी छॾी आहे। उहे असांजी बेगुनाही जा सबूत आहिनि। इंसानी हक़नि जो ॾिहाड़ो कश्मीर में इंसानी हक़नि जूं संगीन भञकड़ियूं जारी। आलमी ॾींहुं ते पाकिस्तान गॾियल क़ौमनि जो मज़लूम कश्मीरनि ॾांहुं ध्यानु छिकाए छॾियो। सदर आरिफ अलवी चयो आहे त कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञकड़ी खे न विसारणु घुर्जे। गॾियल क़ौमूं कश्मीरियुनि जे बुनियादी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ किरदार अदा कनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त अॼु जे ॾींहुं असांखे कश्मीर में इंसानी हक़नि जी सूरत हाल जो जाइज़ो वठणु घुर्जे। भारत कश्मीरियुनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी जे हक़ खां महरूम रखियो वेठो आहे। पाकिस्तान कश्मीरियुनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी जे हक़ लाइ इख़लाक़ी, सियासी ऐं सिफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। चक शहजाद में सेनेटर आज़म स्वाती जो फार्म हाउस सील। फार्म हाउस सीडीए बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट तरफ़ां सील कयो वियो। इख्तियारनि मूजिब कानूनी ज़ाब्तनि जी भञकड़ी ते फार्म हाउस सील कयो वियो। सीडीए गुज़िरियल महीने आज़म स्वाती जे घरवारी खे डॉटे सुम्हारियो हो। फार्म हाउस में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर ऐं गार्डन जो कमरो गैर कानूनी तामीर कयो वियो हो। मलीर जी अदालत शहीद नाज़िम जोखियो जे क़तल केस में एमपीए जाम ओवैस गहराम समेत 8 जवाबदारनि ते फर्द जुर्म लागू करे छॾियो। जवाबदारनि पारां ॾोह क़बूलण खां इनकार। अदालत केस जे शाहिदनि खे 15 दिसंबर ते तलब करे वरितो। मक़तूल जा वारिस एमएनए जाम अब्दुल करीम ऐं जाम ओवैस गहराम खे सुलहनामे तहत माफ़ करे चुका आहिनि। लाड़काने में पीपल्स बस सर्विस जी गाड़ी ते हथियारबंदनि जी फायरिंग। अलाहाबाद थाणे जी हद में गाड़ी ते फायरिंग बाद पुलिस वाक़े वारे हंध पहुती। ड्राइवर जो चवणु आहे त पुल ते चढ़ण वक़्त नामालूम माण्हुनि बस ते फायरिंग कई। फायरिंग दौरान बस में वेठल माण्हुनि में रड़ियूं पइजी वयूं। हैदराबाद जी अदालत सिंध यूनिवर्सिटी जे चइनि शागिर्दनि जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे वारी अदालत गिरफ़्तार कयल चइनि शागिर्दनि खे नारा जेल मोकिलण जो हुकुम ॾेई छॾियो।
पुलिस सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्द अरसलान आरेसर, कुदूस आरेसर, ज़ोहेब लाखो ऐं अमर आकाश लाखो खे सकाफ़ती दिहाड़ो मल्हाइण ते गिरफ़्तार कयो हो। Headline News was brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। सॼी दुनिया में अॼु इंसानी हक़नि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। मज़लूम कश्मीरी अॼु बि भारत जी बर्बरियत ऐं ज़ुल्म जो शिकार आहिनि। इंसानी हक़नि जे आलमी ॾींहुं ते पाकिस्तान दुनिया जो ध्यानु कश्मीर में भारतीय ज़ुल्म तरफ़ छिकाईंदे मुतालबो कयो आहे त कश्मीरियुनि मथां भारतीय ज़ुल्म खे रोके गॾियल क़ौमुनि जे करारदादनि तहत कश्मीरियुनि खे ख़ुदमुख्तियारी जो हक़ ॾिनो वञे। आलमी ॾींहुं जे मौक़े ते सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त अॼु जो ॾींहुं गॾियल क़ौमुनि में इंसानी हक़नि जे आलमी मंशूर जी याद ॾियारे थो। गॾियल क़ौमूं कश्मीरियुनि जे बुनियादी हक़नि जे तहफ़ुज़ लाइ किरदार अदा कनि। सदर आरिफ अलवी वधीक चयो आहे त कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भनकड़ी खे न विसारणु घुर्जे। हुन चयो त पाकिस्तान जो आईन इंसानी हक़नि जी अकासी करे थो। हर पाकिस्तानी जी हौसला अफ़ज़ाई करणु घुर्जे त हू पंहिंजो फर्ज़ न विसारे ऐं पंहिंजे बुनियादी उसूलनि ते सौदेबाज़ी न करे। ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त इंसानी हक़नि जे आलमी ॾींहुं ते लाज़मी आहे त असां कश्मीर में इंसानी हक़नि जी सूरत हाल जो जाइज़ो वठूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त भारत कश्मीरियुनि खे ख़ुदमुख्तियारी जे हक़ खां महरूम रखियो वेठो आहे। पाकिस्तान कश्मीरियुनि जी ख़ुदमुख्तियारी जे हक़ लाइ इख़लाक़ी, सियासी ऐं सिफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। हिन वधीक चयो त असांखे पाकिस्तान जे नज़रिये खे फरामोश न करणु घुर्जे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिकु आज़ाद मुल्क चाहियो थे जिते सभिनी खे हिकु जेतिरा हक़ हासिल हुजनि। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तानियुनि लाइ ख़ुशी जी ख़बर ॾींदे चयो आहे त हाणे पाकिस्तान जो अवाम बि फेसबुक ज़रिए पैसा कमाए सघे थो। मुल्क में न रुगो न्याणियुनि पर नौजवाननि खे बि टेक्नोलॉजी ज़रिए पंहिंजो कारोबार करण लाइ तालीम ॾियारी पई वञे। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंगापुर में मेटा फेसबुक ऑफिस जो दौरो करे अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कयूं। दौरे दौरान ॻाल्हाईंदे परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मेटा हाणे पाकिस्तान में बि इन्वेस्टमेंट करे रही आहे। अॼु खां मेटा जो नओं फ्यूचर शुरू थी रहियो आहे जंहिं स्टार्स जे नाले सां आहे, जंहिं ते नौजवान पंहिंजा वीडियो ठाहे स्टार हासिल करे सघनि था। जेतिरा स्टार मिलंदा ओतिरा पैसा कमाए सघिबा। हिन चयो त पाकिस्तानी तख़लीकार बि हाणे फेसबुक ज़रिए पैसा कमाए सघनि था। स्टार फ्यूचर ज़रिए पाकिस्तानियुनि खे तमामु घणो फ़ाइदो थींदो। नसीराबाद में पीटीआई सेनेटर आज़म सवाती खे नसीराबाद कोर्ट में रिमांड लाइ पेश न कयो वियो। पीटीआई सेनेटर सैफुल आबड़ो पंहिंजे लीगल टीम सां गॾु सुबुह 9 वॻे सिविल कोर्ट नसीराबाद पहुची वियो। हुन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सेनेटर सैफुल आबड़ो चयो त अॼु नसीराबाद में सेनेटर आज़म सवाती खे पेश करणो हो पर खेसि पेश न कयो वियो आहे। हिन चयो त असां सुबुह खां हिते बीठल आहियूं। हिन वक़्तु एसएसपी कंबर शिदात कोट फोन बि अटेंड नथो करे। पीपी हुकूमत ज़ुल्म ऐं ज़्यादती जी इंतहा करे छॾी आहे। सेनेटर सैफुल आबड़ो जो चवणु हो त आज़म सवाती दिल जो मरीज़ ऐं 67 सालनि जो बुज़ुर्ग शहरी आहे। मामले खे संजीदगी सां ॾिठो वञे। पीटीआई कारकुननि पारां सेनेटर सैफुल आबड़ो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में इंडस हाईवे ते एहतजाजी मुज़ाहिरो बि कयो वियो। ॿिए तरफ़ वकील जो चवणु आहे त बलूचिस्तान पुलिस आज़म सवाती खे सिंध पुलिस हवाले कयो ऐं सिंध पुलिस सेनेटर आज़म सवाती खे सखर मुंतक़िल करे छॾियो आहे। वाज़े रहे त पीटीआई सेनेटर आज़म सवाती ख़िलाफ़ कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में इदारनि ख़िलाफ़ तक़रीरूं करण जा केस दाख़िल आहिनि। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध सदियनि खां हिकु आहे ऐं हिकु रहंदी सिंध में कंहिं नए सूबे जी ॻाल्हि कई त उनजो हशर बुरो थींदो। टठे जे सियासी शख़्सियत सैयद एजाज़ शाह शिराज़ी जी ॿी वरसी जे मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सिंध सदियनि खां हिकु आहे ऐं रहंदी। जेकॾहिं कंहिं सिंध जे नए सूबे जी ॻाल्हि कई त उनजो हशर बुरो थींदो। मुराद अली शाह जो चवणु हो त रुगो सराइकी सूबे जी ॻाल्हि थी रही आहे। ॿियनि सूबनि में बि इंतज़ामी यूनिट ठही सघनि था पर सिंध बाबति केर बि न सोचे। वज़ीर आला सिंध चयो त इमरान खान ऐं उनजो टोलो इलेक्शन कराइण जे चकर में आहे ऐं असां बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली में मसरूफ़ आहियूं। मुल्क में आम चूंडूं पंहिंजे मुक़रर वक़्त ते ई थींदियूं। असां सिंध में मकानी चूंडनि लाइ तयारु आहियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह वधीक चयो त बोर्ड सबबि सिंध सभ खां वधीक मुतासिर थी। 20 लख घरनि जी तामीर लाइ आलमी बैंक ऐं ॿिया इदारा मदद करे रहिया आहिनि। इमरान ऐं संदसि टोले जूं साज़िशूं कामयाब न थींदियूं।
कराची में मौजूद अमरीकी कौंसलेट पारां जिनसी बुनियादन ते थींदड़ तशद्दुद खिलाफ 16 ॾींहं वारी सरगर्मी पुॼाणी ते पहुती। पुॼाणी वारी तकरीब दौरान मेणबतियूं ॿारे जिनसी बुनियादन ते थींदड़ तशद्दुद खिलाफ वेढ़ जारी रखण जो अज़म कयो वियो। कराची में मौजूद अमरीकी कौंसलेट 16 ॾींहं खां जिनसी बुनियादन ते थींदड़ तशद्दुद जे खात्मे वारी मुहिम जी पुॼाणी वारे ॾींहुं अमरीकी कौंसलेट जनरल इन मुहिम में शामिल माण्हुनि सां बहस में हिस्सो वठी इंसानी हक़नि जे हवाले सां हलंदड़ इन यादगार मुहिम जी पुॼाणी कई। कौंसलेट जनरल लियाम ऑफलिंग समेत सफारतखाने जे ॿियनि ऑफिसरनि तकरीब में शिरकत कई, जिन औरतुनि, छोकिरनि ऐं ट्रेजेंस खिलाफ थींदड़ तशद्दुद खे रोकण वारनि पॉलिसियुनि जी हिमायत करण जो यकीन ॾियारींदे मेणबतियूं ॿारे जिनसी बुनियादनि ते थींदड़ तशद्दुद खिलाफ वेढ़ जारी रखण जो अज़म कयो। उन मौके ते ॻाल्हाईंदे अमरीकी कौंसलेट जनरल लियाम ऑफलिंग चयो त जिनसी बुनियादनि ते थींदड़ तशद्दुद जो ख़ात्मो आलमी कोशिशुनि जो घरजाऊ आहे, जिते औरतुनि जी हैसियत खे बुलंद करणो आहे ऐं छोकिरियुनि लाइ अॻिते वधण जा मंज़र तख़लीक़ थियनि। हू पंहिंजे मुकमल ताक़त सां तशद्दुद तोड़े ख़ौफ़ खां आज़ाद थी पंहिंजे माण्हुनि में तब्दीली जी नुमाइंदगी कंदा। अमरीकी सिफारतखाने जे कराची ऑफिस मुख़्तलिफ़ मक़ामी माण्हुनि सां माली सहकार ज़रिए 16 ॾींहं जे इन्ही मुहिम में मुसलसल सरगर्म रही आहे। सिफारतखानो मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि, कारकुननि ऐं माली सहकार वठंदड़नि सां राब्ते में रहियो आहे त जीअं इहे वधि खां वधि माण्हुनि खे जिनसी बुनियादनि ते थींदड़ तशद्दुद जे ख़ात्मे वारे हिन बहस में शामिल करे सघनि। जिनसी बुनियादनि ते थींदड़ तशद्दुद जे 16 ॾींहं वारी मुहिम जो बुनियाद 1991 में पियो। इहा सालियानी मुहिम औरतुनि खिलाफ तशद्दुद जे ख़ात्मे वारे आलमी ॾींहुं 25 नवंबर खां शुरू थी इंसानी हक़नि जे आलमी ॾींहुं 16 डिसंबर ताईं जारी रही। मलिर जी अदालत शहीद नाज़िम जोखियो क़त्ल केस में पीपल्स पार्टी जे एमपीए ॼाम अवेस गहराम समेत 8 जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू करे छॾियो आहे। मलिर जी अदालत में शहीद नाज़िम जोखियो क़त्ल केस जी ॿुधणी थी, जंहिं दौरान अदालत जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू कयो। पीपल्स पार्टी जे एमपीए ॼाम अवेस गहराम समेत 8 जवाबदारनि ॾोह क़बूल करण खां इनकार कयो। अदालत 15 डिसंबर ते केस में शाहिदनि खे तलब करे वरितो। शहीद नाज़िम जोखियो जा वारिस क़त्ल केस में नामज़द एमएनए ॼाम अब्दुल करीम ऐं एमपी अवेस गहराम समेत 5 जवाबदारनि खे राज़ीनामे तहत माफ़ करे चुका आहिनि। ज़रनि जो चवणु आहे त जवाबदारनि पारां बेवाह शेरीन जोखियो खे देत जी रक़म बि अदा कई वई आहे। वारसनि ऐं जवाबदारनि विच में तइ थियल सुलहनामो अदालत में जमा करायल आहे, जंहिं जी अदालत अञा ताईं मंज़ूरी नाहे ॾिनी। मोटरवे मेगा करप्शन केस में नौशर फिरोज मां गिरफ़्तार जवाबदारनि खे 6 ॾींहं जे रिमांड ते एंटी करप्शन हवाले कयो वियो। मुख्तियारकार भिरिया शफ़ीक सुमरो, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सजाद मेमण, गुलाम हक्कानी, अज़ीज़ अंसारी, रुस्तम खोसो ऐं आफ्ताब सुमरो खे सखर जी एंटी करप्शन जी अदालत में पेश कयो वियो। जांच ऑफिसर अदालत खे दरख़्वास्त कई त जवाबदारनि खां अञा जांच करणी आहे, वधीक रिमांड ॾिनो वञे। अदालत जांच ऑफिसर जी दरख़्वास्त मंज़ूर कंदे गिरफ़्तार जवाबदारनि खे वधीक 6 ॾींहं जे रिमांड ते एंटी करप्शन पुलिस हवाले कयो। मोहन जो दड़ो वेझो झेड़े में ज़ख़्मी थियल औरत फौत थी वई। 6 ॾींहं अॻु ॻोठ हाजी मशोई में घर जे मामूली ॻाल्हि तां सोटन में झेड़े दौरान डंडा लॻण करे ज़ख़्मी थियल 45 वरनि जी नेहाला उर्फ सदूरा ख़ातून धीअ अल्हा ॾितो सोहो ज़ख़्म जा सूर न सहंदे कराची जी अस्पताल में फौत थी वई। हुन फोती नारी जे भाउ नज़ीर सोहो पारां एयरपोर्ट थाणे ते जवाबदार रोशन सोहो, अली मुराद ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ एनसी दाख़िल कराए छॾी। फोती नारी जे भाउ नज़ीर सोहो चयो त क़त्ल जो केस दाख़िल न थियण ताईं लाश न दफ़नाईंदासीं। ॿिए तरफ़ पुलिस जो चवणु आहे त फोती नारी जा तफ़सील वठी छॾिया आहिनि, पोस्टमार्टम थियण बाद केस दाख़िल कयो वेंदो। डहरकी में बिजली जो करंट लॻण सबब टैक्सी ड्राइवर फौत थी वियो। शहर जे जोंग रोड ते 11,000 बिजली जी तार किरण सबब टैक्सी ड्राइवर रफ़ीक उराई करंट लॻण सबब थॾे ते फौत थी वियो। बिजली जो करंट लॻण सबब नौजवान खे सरकारी अस्पताल आंदो वियो, जितां ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारसनि हवाले कयो वियो। हुराफोती जे वारसनि ॿुधायो त सेप्को डहरकी जी नाअहली सबब शहर में 11,000 बिजली जूं तारूं हेठि लटकियल आहिनि, जंहिं करे ही वाक़ियो पेश आयो आहे। शहीदनि जे शहर लाड़काणे में हथियारबंद पीपी क़यादत पारां हलायल बस सर्विस ते फायरिंग करे फरार थी विया। शहर जे इलाहाबाद थाणे जी हद में हथियारबंदनि पीपल्स बस सर्विस जी गाड़ी ते फायरिंग कई। होॾां इतला ते हद जी पुलिस 1 फायर बेस समेत वाक़े वारे हंध पहुची तफ़सील वठी जांच शुरू करे छॾी।
उन मौके ते पीपल्स बस सर्विस जे ड्राइवर हाकिम अली बिरोही ॿुधायो त असां इलाहाबाद नागेशा वटां मुसाफ़िर खणी बाकराणी टावर वटि ॿिया मुसाफ़िर खणी ओवर हेड ब्रिज ते जीअं ई चढ़ियासीं त अबू बकर मक़ाम वारे पासे खां फायर थियो, जेको कैलेंडर साइड वारे पासे एसी खे लॻण सबबि शीशो टुटण ते मुसाफ़िरनि में रड़ियूं पइजी वयूं। हिन चयो त को बि जानी नुक़सान न थियो। अहिड़ो इतलाह वनफाए मददगार बेस ऐं इलाहाबाद थाणे जी पुलिस खे ॾिनो आहे। हुन वधीक ॿुधायो त अॻु बि बस सर्विस खे सिरोटा लॻा आहिनि। असां समझो त ॿारनि जी का हरकत आहे। ॿिए तरफ़ आख़िरी इतलाउनि ताईं पुलिस का बि गिरफ़्तारी अमल में न आई आहे। This time check is brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। नाज़रीन, बुलेटिन में खबरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हिते वठंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो। आसमां से उतरा हो जैसे राज़िक का परछावा, खेत से करे रिस्क इतना पैदा, भर दे खाली थावा। मरे अमराने रासानुंडा ते लाभ जोरे, मरे अमराने रानी रे दुए रे, अरे सानुंडा ते लाभ जोरे, लाए जो है टीला मारो तेरियो रे। मिट्टी में गूंथे तू सारे रंग मेहनत के, दुख सुख को देखे तू जी के संग कुदरत के, बनाता है तू अपना अब जहान। सलाम किसान, सलाम किसान, सलाम किसान। तूने मेहनत से दी वतने को हरियाली, देखे तो मुस्काए गंदुम की हर बाली, तेरे दम से आई धरती पर खुशहाली। किया है तूने सरसब्ज ये पाकिस्तान। सलाम किसान, सलाम किसान, सलाम किसान। मरे अमराने रानी रे दुए रे, अरे तांडा ते लाभ जोरे, लाए जो है टीला मारो तेरियो रे। मरे अमराने रो रंगुड़ा ते लाभ जोरे, के मरे अमराने रानी रे दुए, अरे लाए जो रे है टीला तेरियो। एक हमारा जमाना था कि हमने 6 बच्चे पाले। सही बात है। और आजकल की लड़कियां हमारी जैसी हो ही नहीं सकती। ये हमारी तरह हो भी नहीं सकती और इसे होना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल गया है, वो फैसले हमारे थे, इन्हें अपने फैसले खुद करने हैं। और हमारा फैसला है अपने वसाइल और बच्चों की पैदाइश में तवाज़ुन, ताकि हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। बनाता है तू अपना अब जहान। सलाम किसान। सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। Admissions are now open in Mehran International School, Wadua Road, Kasmabad, Hyderabad, for playgroup to class 9. In the newly built air-conditioned facility at Mehran International School, the main features are it has spacious and well-equipped classrooms with perfect environment for intellect and physical growth, competent faculty and best teaching practices, holistic developed curriculum which focuses on character building,
Mehran International School has separate classrooms for girls from class 6 onwards, appropriate space for sports and co-curricular activities, audiovisual ads, and science lab. We are offering great opening discounts of 20% for all new enrollments and waiving off registration fees for first 100 students. Enroll now to get the great discount. For further details or schedule a visit to view the campus, please contact 03 or 022265. I am pleased to note that there has been progress on all fronts. Sufficient initial resources to strengthen the OIC office in Kabul and the operation of the Special Envoy have been provided by the OIC membership. I have learnt that the new office of the OIC mission in Kabul was recently inaugurated. I hope it will be instrumental in channeling OIC member states' support to Afghanistan. Some member states, including Saudi Arabia, have donated to the Afghan Humanitarian Trust Fund. Ce fonds pour l'Afghanistan, nous pensons que les États membres doivent beaucoup l'aider pour qu'il puisse faire les missions qui lui sont assignées. J'ai appris que le bureau de l'OCI à Kaboul a été inauguré récemment et j'ai même appris que l'Arabie Saoudite a participé, a donné un très grand fonds pour ce fonds humanitaire du Cachemire. I have also emphasized that the people of Afghanistan are looking forward to the OIC's support, and the time has come to deliver concrete results. Pakistan remains confident that under the Secretary General's leadership and that of his special envoy, we will see a positive impact in alleviating the humanitarian situation in Afghanistan. Je pense que l'Afghanistan sera mieux si le secrétaire général et son envoyé spécial sont octroyés les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre les plans qu'ils ont désignés pour l'Afghanistan. Et nous, en tant que Pakistan, nous travaillons pour ça. I have also emphasized that the people... I have again emphasized to him that Pakistan stands shoulder to shoulder with Palestinian brothers and sisters, as mandated by recent CFM resolutions. The OIC should prioritize preparing an action plan to raise the Palestinian issue internationally. J'ai discuté avec son Excellence aussi que Pakistan et l'OCI vont travailler épaule contre épaule pour la cause palestinienne et que cette cause-là, cette lutte commune sera basée sur les résolutions qui sont déjà adoptées par les CFM organisées dans le cadre de l'OCI. You may be aware, Pakistan will be convening the 18th OIC Trade Fair from the 16th to the 18th of June 2023 in Lahore, and I've sought the Secretary General's support and guidance. As part of this preparation, the Secretary General will also be meeting with the Minister of Commerce to discuss how Pakistan and the OIC can work together towards a successful trade fair. Vous n'êtes pas sans savoir que le Pakistan va organiser une foire commerciale en 2023 en juin. Et nous pensons que le Pakistan va jouer un rôle très important en collaboration avec l'OCI et même le secrétaire général va être reçu par le ministre du Commerce. Et nous demandons au niveau de ce présidium que l'OCI nous aide le Pakistan à pouvoir organiser cette foire commerciale. It is an absolute honor and a privilege for me to host the Secretary General of the OIC here in Pakistan. Our country, the people of Pakistan, attach a great deal of importance to the OIC. My party, the Pakistan People's Party, attaches a great deal of importance to the OIC. Every Pakistani is proud of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's role
when he chaired the OIC meeting in Lahore. And I am incredibly honored that as Foreign Minister of Pakistan, I too get to serve as chair of the Council of Foreign Ministers of the OIC and hosted the ministerial meeting alongside the UN Secretary General here in New York on the sidelines of the UN General Assembly, and now I have the privilege and honor to host the OIC Secretary General on his first bilateral visit to Pakistan. Mr. Secretary General, we welcome you, and I would now like to pass the mic over to you for you to share your remarks. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour les propos que vous venez de tenir sur notre discussion de ce matin, qui a d'une importance capitale. Thank you, Excellency, Mr. Minister, for your kind words and for the issue we have discussed during our discussion right now. Vous savez, comme je l'avais dit ce matin, votre pays est le pays fondateur de cette organisation, et parmi les pays fondateurs de cette organisation. Et la deuxième réunion de l'organisation s'est tenue à Lahore, au Pakistan. Donc, les relations avec l'OCI, entre nous et l'OCI et le Pakistan sont très importantes et très stratégiques. As I said this morning, Pakistan is one of the founding members of OIC, and the second summit of the OIC was held here in Lahore, and that's why we, as the OIC, we pay a particular attention for the OIC and the activities proposed by OIC, by Pakistan. La question du Jammu et Cachemire est au cœur de la politique étrangère du Pakistan. Et depuis plus de 4 décennies, l'OCI n'a cessé d'apporter un soutien fort et unanime au peuple de Jammu-Cachemire dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination. The issue of Kashmir is one of the main foreign policy of Pakistan, and more than 4 decades, the OIC is helping, is assisting Pakistan in coming over these challenges of Jammu and Kashmir. Lors de la 48e session du CMAE, tenue à Islamabad le 22-23 mars 2022, le Conseil a retiré son rejet des actions illégales et unilatérales de l'Inde depuis le 5 août 2019. During the 48th session of the CFM tenure here in Islamabad on 22nd, 23rd March 2022, the Council of Foreign Ministers, they reiterate the rejection of all the illegal acts and unilateral acts perpetrated by India during 2019. Et donc l'OCI avait déjà demandé à l'Inde d'annuler toutes les mesures illégales et unilatérales prises à partir du 5 août 2019. We as OIC, we request India to cancel all these decisions he has taken regarding Kashmir. Donc en marge de la 48e session de la CME, le groupe de contact de l'OCI sur le Jammu et Cachemire a tenu une réunion ministérielle et a réaffirmé le soutien de l'OCI aux droits du peuple de Jammu et Cachemire. On the sideline of the 48th session of the CFM, the contact group, the OIC contact group for Kashmir, for Jammu and Kashmir, have set a ministerial session and they reaffirm the assistance of the OIC to the right of the people of Kashmir to self-determination. Tout ça peut se faire sur le groupe de contact, adopter un plan d'action détaillé avec des tâches spécifiques assignées à lui-même et aux États membres du secrétariat général, à l'envoyé spécial pour le Jammu et Cachemire, à la CPIDH, à d'autres organisations et institutions subsidiaires de l'OCI pour la mise en œuvre des résolutions de l'OCI sur le Jammu et Cachemire. The contact group has adopted a plan of action, detailed plan of action, with specific assignment in collaboration with member states, the General Secretariat, the Special Envoy for Jammu and Kashmir, and the IPHRC, and the other relevant OIC institutions to come
to overcome all these challenges facing the issue of Jammu and Kashmir. Le représentant spécial du secrétaire général de l'OCI pour le Jammu et Cachemire, le professeur Dubaï, s'est rendu au Jammu et Cachemire et nous a fait venir des informations très importantes. During, as part of this activity, the special envoy, the OIC special envoy for Jammu and Kashmir, Dr. Yusuf Al-Dubai, he made a visit to Jammu and Kashmir and he gave us detailed information. And inshallah, during the next CFM, he will be providing a comprehensive report in front of the foreign minister of the OIC member states. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Thank you. Now we will open it to the Q&A. For the Q&A session, we'll start with PTV. Ms. Namra, you can ask the question. Thank you, sir. Sir, my question is to the Foreign Minister. Sir, Secretary General OIC will be visiting LOC in Azad Kashmir and he will also be meeting the Kashmiri leadership there. So what do you think, what message should go to the international community with this visit? And I would also like to direct a question to the Honorable Secretary General OIC. Sir, what is your message to the international community about the illegal occupation of Jammu and Kashmir? Thank you. The OIC Secretary General, inshallah ta'ala, kal, he will be visiting Azad Kashmir, and we are very grateful to the Secretary General of the OIC for undertaking this visit. It is an incredibly important visit to send a message to the entire world that the Muslim Ummah stands in solidarity with the people of Kashmir, that we have not forgotten the people of Kashmir, and a stark reminder to the world, to the United Nations, to the international community, that be it the agenda of Kashmir, the agenda of Palestine, these are the unfinished agenda of the international community, and we must work together to resolve these conflicts. Je voudrais rassurer le public et elle-même que l'OCI, en venant ici en tant que secrétaire général, c'est pour rappeler d'abord que nous soutenons la cause du peuple cachemiri. C'est une façon pour nous de reconfirmer notre position qui est claire, de soutenir la cause du peuple cachemiri qui a beaucoup souffert de cette injustice qu'il vit. If I take the decision to come here to Pakistan, it is to show to Pakistani, to the international organization and to the international community that OIC is supporting the cause of the Kashmiri, is working hand with Pakistan to find out a peaceful solution for this issue of Kashmir. Next, I will request Mr. Mazhar Iqbal from PNL. Thank you very much. I have a two-part question. I am Mazhar Iqbal representing PNN. My question is to His Excellency, the Secretary General OIC. Excellency, I have no doubt in my mind that as a Secretary General of OIC, you are well aware about the human rights situation there in Kashmir. I just want to know that what Pakistani Foreign Minister, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, added in your information with reference to human rights violation in Indian-held Kashmir. One, as you had just mentioned that for the last 4 decades, OIC is supporting Kashmir cause and the stance of Pakistan, particularly on Kashmir issue. Would you like to elaborate that what is the outcome of this 4 decade-long support to the Kashmiri people? Thank you. Non, je veux dire que beaucoup de choses ont été faites quand même. La question du peuple cachemiri a été le souci
de l'OCI depuis sa création. Donc, je ne pense pas que l'OCI n'a rien fait. Non, au contraire, beaucoup de choses ont été faites par notre organisation pour soutenir le peuple cachemiri. For these 4 decades, the OIC had never stopped. They spent no effort to find out a solution in coordination with OIC member states. But as you may know, there are some kind of issue. It's not easy to find a solution one day. That's why we are hoping and we are keeping working with all the stakeholders, especially with the international organization, especially with some relevant member countries like Pakistan, to find out a solution. But as you know, the OIC General Secretary General is working in coordination with all 57 member countries. Next, we have Arab News. Ms. Saima Shakir from Arab News. Thank you very much, sir. I would rather like to take up the issue of Afghanistan. As in the previous OIC meeting, the issue of Afghanistan has been taken categorically, and there was one big session was also held. So if you can kindly elaborate a little that how much issues have been taken by the OIC Secretary General or at the platform of OIC to resolve issues of Afghan people, especially Afghan women. So far, there is no change, no such change in the policies, and there is no recognition of Afghan Taliban. There is chaos, situation of chaos. So what is OIC exactly doing in practical, which should be seen on ground situation, as particular as the reality meets? Thank you very much. Et concrètement, qu'est-ce que l'OCI a fait Pour la cause de l'Afghanistan. Pour l'Afghanistan. Oui, pour l'Afghanistan, madame, vous le savez, je ne sais pas, mais on avait, le secrétaire général de l'OCI a désigné un envoyé spécial qui doit tout le temps être en Afghanistan et apporter des nouvelles de la situation en Afghanistan. C'est un haut diplomate, un grand diplomate a été nommé pour ce poste, et donc c'est pour dire que nous suivons ce qui se passe en Afghanistan. La situation n'est pas facile, vous le savez, mais nous essayons d'être tout le temps en contact sur place. On a même envoyé quelques chefs religieux pour aller discuter avec les Afghans, les chefs religieux afghans sur la question de l'éducation des femmes, des filles. Et donc on essaye de discuter avec les autorités afghanes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la situation, que la situation des jeunes filles, l'éducation des filles revienne à sa place, que les femmes peuvent prétendre à des postes importants de travail. Et donc tout ça, nous voulons que les Afghans, les autorités enfin de facto qui sont en Afghanistan, sachent le souci. Et notre souci n'est pas le nôtre seulement, il est le souci de toute la communauté internationale sur cette question des droits des femmes et des filles en Afghanistan. Donc, à ce niveau-là, nous faisons un grand travail. Nous sommes en contact avec les Afghans, avec les talibans. Nous avons des contacts. Notre envoyé spécial va les voir souvent. Nous avons rouvert notre bureau, le bureau de l'OCI qui est à Kaboul, a été rénové complètement. Et donc, l'équipe va travailler en discutant avec les autorités de ces pays. Dear Madam, as you may know, the OIC is working with the de facto established government of Afghanistan. You may recall that as the Secretary General for OIC,
appoint a special envoy for Afghanistan. And even this special envoy, he went to Afghanistan with some high scholar from the OIC member state, led by the Fiqh Academy. They went to Afghanistan to discuss with the high authority of Afghanistan. They have some discussion, and we are still discussing with them bilaterally. The other thing is we established our office in Kabul, and this office in Kabul is the joint between our activity in the General Secretariat and the de facto authority in Afghanistan. But as you may know also, Afghanistan is an independent country, and we at the OIC, we are working by consensus. That's why if we have to take any decision, it should be taken by all member states, and for this we have some contact with Afghanistan, with the authority in Afghanistan. They were somehow receptive with our concern, because our concern as OIC is also the concern of the international community. That's why we will work in coordination with all member states, especially Afghanistan and other member states, just to find out the solution, especially for the education of young women, because even my special envoy in Afghanistan went there also to re-discuss with them, but we are keeping discussing. It's not easy. I will not tell you it's easy to discuss with them. It's not easy, but we'll keep following with them, and solution may come one day. Merci. We are very grateful to the OIC Secretary General for their role in the situation in Afghanistan. As I mentioned in my opening statement, not only have we opened inaugurated the OIC's mission in Afghanistan, the OIC Secretary General has established a special envoy for Afghanistan. The special envoy is engaging with Afghanistan. But obviously it is a difficult and complex situation. I believe the OIC as a platform, as one that represents the entire Muslim world, is a good platform to use to engage, particularly with Afghanistan. While engaging with Afghanistan, we have two messages, one for Afghanistan and one for the international community. For the international community, we have consistently insisted that they engage, and do not repeat the mistakes of the past. We saw in the last Afghan war that when that conflict was over, the international community washed their hands of the situation in Afghanistan, abandoned the people of Afghanistan, and then we had to pay the price with another Afghan war. We do not want to see that situation repeat itself. We would continue to beseech the international community to engage with Afghanistan, to unfreeze their funds, to allow for their banking channels to function. Surely the international community doesn't believe that the best pursuit of women's empowerment, or the way to encourage women's empowerment, is to facilitate the starvation of the people of Afghanistan. There's a humanitarian crisis developing in Afghanistan. 97% of the population are at risk of falling beneath the poverty line. So it is very important for the international community to continue to engage, to continue to engage. For the interim government of Afghanistan, our message to them is to help us help them, to create the environment within Afghanistan that would allow for the international community to engage more with them, and for those who want the best for the people of Afghanistan, for those who want to support the people of Afghanistan, to make that environment possible. In order to do so, we must live up to the commitments not made by me, not made by you, but the commitments made by the interim government in Afghanistan with their own people and with the international community on the issue of terrorism, on the issue of women's rights and women's education. It would help us help the people of Afghanistan if the interim government fulfilled their obligations. I think it's getting late, and we have to excuse our guest today, so this concludes our briefing. Thank you very much. Thank you. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी
सिर्फ मेहरान। जो मौजूद जिंदगी में तवाज़ुन और हमें जिम्मेदार वालिदैन बना सकते हैं, उनके बारे में बात तो सभी करते हैं। हम सुन सकते तो यकीन करते। पूछते रहते हैं अगला बच्चा कब आएगा। अभी नहीं, हमारी आमदनी में हम सिर्फ एक ही बच्ची का सही से ख्याल रख सकते हैं। अगले का तो हम बाद में भी कभी भी सोच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वक्त आ गया है खानदानी मंसूबासाजी पर होने वाली बातों के जानने का। आज के वक्त में वक्त है मंसूबासाजी का। This transmission is brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। This time check is brought to you by हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। एक हमारा जमाना था कि हमने 6 बच्चे पाले। सही बात है। और आजकल की लड़कियां हमारी जैसी हो ही नहीं सकती। ये हमारी तरह हो भी नहीं सकती और इसे होना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल गया है, वो फैसले हमारे थे, इन्हें अपने फैसले खुद करने हैं। और हमारा फैसला है अपने वसाइल और बच्चों की पैदाइश में तवाज़ुन, ताकि हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। केबल छोड़े और अपने BDCL कनेक्शन पे लगवाएं डिजिटल क्वालिटी टीवी सर्विस। पॉज, प्ले एंड रिवाइंड के साथ एंजॉय नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद BDCL स्मार्ट टीवी। तो आज ही अपना फ्री सेट टॉप बॉक्स हासिल करने के लिए 1218 पे कॉल मिलाएं। BDCL। सैलाब की वजह से लाखों हामला खवातीन को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। मुश्किल की इस घड़ी में खानदानी मंसूबा साजी और भी जरूरी हो गई है ताकि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन रहे। इसलिए आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। This transmission is brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। लाड़काणे जी अदालत ॾोह साबित थियण ते पुलिस एहलकार खे 5 साल कैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी। सेशन कोर्ट जे 6 नंबर जज जी अदालत तालुके थाणे जी हद में मोटरसाइकिल सवार खे टक्कर हणंदड़ पुलिस मोबाइल जे ड्राइवर सरताज वाहूचो खे ॾोह साबित थियण ते 5 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई। याद रहे त 2018 में तालुके थाणे जी हद में गश्त दौरान रस्ते वेंदड़ मोटरसाइकिल सवार नौजवान खे पुलिस मोबाइल जो टक्कर लॻो हो। बरतानिया सरकार सिंध जे तकरारी पीर खे बरतानवी पाबंदियुनि जी लिस्ट में शामिल करे छॾियो आहे ऐं ईअं पाकिस्तान दुनिया जे उन्हनि 11 मुल्कनि में शामिल थी वियो आहे जिते हक़नि जी भञकिड़ी कंदड़नि खे बरतानिया बि सज़ाऊं ॾींदी। बरतानवी हाई कमीशन जो चवणु आहे त मज़हबी ऐं अक़ीदे जी आज़ादी खे बरतानिया इंतहाई संजीदगी सां वठंदी आहे ऐं सॼी दुनिया में मज़हब अक़लियतुनि जे हक़नि लाइ कमु कंदी आहे। पाबंदियुनि जे नए पैकेज में असांखे निशानो बणायो वियो आहे जेके बुनियादी आज़ादनि जी भनकड़ी कंदा रहनि था। सिंध जे घोटकी वारे इलाइक़े जे पीर मियां अब्दुल हक आफ भरचूंडी खे नंढी ॼमार जे गैर मुस्लिमनि जी जबरी शादियुनि ऐं मज़हब मटाइण लाइ बरतानिया ज़िम्मेवार करार ॾिनो आहे। हिन पैकेज में पाकिस्तान जो को बि ॿियो शहरी शामिल न आहे। हिननि पाबंदियुनि लॻाइण खां पोइ पाबंदियुनि हेठि आयल शख़्स बरतानिया में को बि कारोबार न करे सघंदो ऐं बरतानिया जे कंहिं शहरी सां बि का ॾेती लेती न करे सघंदो। इन खां सवाइ पाबंदियुनि हेठि आयल शख़्स जी बरतानिया आमद ते बि पाबंदी हूंदी। ॿिए तरफ़ मियां मिठू मथस लॻायल इल्ज़ामनि जी हमेशा तरदीद कंदो रहियो आहे। चक शहजाद में सेनेटर आज़म सवाती जो फार्म हाउस सील कयो वियो आहे। फार्म हाउस CDA बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट तरफ़ां सील कयो वियो। CDA बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट इख्तियारनि मूजिब कानूनी ज़ाब्तनि जी भनकड़ी ते फार्म हाउस सील कयो वियो। CDA गुज़िरियल महीने आज़म सवाती जी घरवारी खे नोटिस उमाणियो हो। इख्तियारनि मूजिब फार्म हाउस में 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर ऐं गार्डन जो कमरो गैर कानूनी तामीर कयो वियो हो। वाज़ रहे त PTI सेनेटर आज़म सवाती इदारनि खिलाफ़ तकरारी ट्वीट करण ते गिरफ़्तार थियल आहे। संदसि खिलाफ़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ थाननि ते केस बि दाख़िल थियल आहिनि। गढ़ी हसन वेझो मिटीअ सां भरियल ट्रैक्टर ट्राली कल्टी थियण सबब नौजवान फोत थी वियो। शहर जे धो पाड़े वासी 16 वरनि जो ट्रैक्टर ड्राइवर अब्दुल खालिक वल्द अलिफ धो रस्ते में कार खे क्रॉस ॾियण दौरान शाख में ट्रैक्टर ट्राली कल्टी थियण सबब फोत थी वियो। इतला ते वारसन पहुची नौजवान जो लाश घर खणी विया। मण घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। खुदा वारसन जो चवणु आहे त असांजो नौजवान अब्दुल खालिक धो ट्रैक्टर कल्टी थियण सबब फोत थी वियो आहे। इहो हिकिड़ो ई हो जेको मज़दूरी करे घर हलाईंदो हो।
खानपुर वेझो एसएसपी शिकारपुर 4 ॼणनि खे अगवा थियण खां बचाइण जी दावा कई आहे। एसएसपी शिकारपुर तर्जुमान राब्तो कंदे ॿुधायो त तेघाणी गैंग, शहाणी गैंग ऐं जागराणी गैंग जे जवाबदारनि 4 ॼणनि खे अगवा करण जो मंसूबो जोड़ियो वियो हो। एसएसपी जे तर्जुमान वधीक ॿुधायो त ॻोठ गुल बुरड़ो जो वासी अता मोहम्मद बुर्रो, कराची मेमण ॻोठ मलीर वासी सुल्तान अहमद, जिले मटियारी जे अब्दुल गफार चना, पंजाब जे रहीम यार खान वासी मोहम्मद तारिक खे और ताणे आवाज़ ते हिरखाए अगवा करण जी कोशिश जो मंसूबो ठाहियो वियो हो। हिन चयो त ॼाणायल माण्हुनि खे कॉल रिकॉर्डिंग जी मदद सां एसएसपी शिकारपुर जे टेक्निकल ऐं स्पेशल टीम अगवा थियण खां बचाए वरितो आहे। एसएसपी शिकारपुर जे तर्जुमान जो वधीक चवणु हो त असां अगवा खे थींदड़नि सां राब्तो करे मुमकिना ख़तरे सां आगाह करे खेनि अगवा थियण खां बचायो आहे। जेकमाबाद जे खजाने ऑफिस जे अमलदारनि बंद पियल जाली आईडीज़ ॿीहर खोले पघार जारी करे छॾी। जेकमाबाद में तालीम खाते जे खजाने ऑफिस जे अमलदारनि जी मिली भगत सां जाली आईडीयूज़ खोले करोड़ रुपयनि जे करप्शन थियण जो इंकशाफ थियो आहे। तुल जे टीओ फीमेल खजाने ऑफिस जे अमलदारनि खे हिकु लेटर जारी करे जाली आईडीयूज़ बंद करण लिखियो हो, जंहिं ते अमल कंदे ॼाणायल आईडीयूज़ बंद करण बाद कुझु महीना गुज़रण खां पोइ ॿीहर आईडीज़ खोले पघार जारी कई वई आहे। ज़रियनि मूजिबि अहिड़े क़िस्म जूं केतिरियूं ई जाली आईडीयूज़ खोले पघार जारी कई पई वञे, जंहिं में अक्सर तालीम खाते जे अमलदारनि जा वेझा माइट शामिल आहिनि। शहदादकोट में एसयूपी जी सालगिरह मल्हाए केक काटियो वियो। शहदादकोट में खुश्क हाउस ते सिंध यूनाइटेड पार्टी जे 16हीं सालगिरह जे हवाले सां तकरीब मुनक़िद करे अॻवाननि ऐं कारकुननि सालगिरह जो केक काटियो। तकरीब में एसयूपी जे अॻवाननि पीर बख्श भट्टी, हमल खान खुश्क, हाकिम मस्तोई, रमीज़ तुनियो, अलादाद खुश्क, बचल बागी ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध यूनाइटेड पार्टी सिंध वतन जी खुशहाली तरक़ी बका लाइ 16 सालनि खां जिदोजहद करे रही आहे। हिननि चयो त एसयूपी बिटे मकानी निज़ाम, गैर कानूनी रहंदड़ गैर मुल्कियनि खे परॾे मां नेकाली सिंध जे बेटियनि वसीलनि साहाली पट्टी जे मालिकी ऐं बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली लाइ अहम किरदार अदा कयो आहे। भिरिया रोड में नुसरत रोज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो, जंहिं में वॾी तादाद में इंस्टीट्यूट जे शागिर्दनि, शागिर्दियाणियुनि तोड़े उस्तादनि शिरकत कई। प्रोग्राम में शागिर्दनि तोड़े शागिर्दियाणियुनि सकाफ़त, सिंधी ॿोली, कल्चर तोड़े मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते टैबलो पिणु पेश कया विया। तकरीब में डायरेक्टर नर्सिस पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाब शाह, पीर बख्श जोखियो, बशीर अहमद पीर साधु, अब्दुल अज़ीज़ आखुंद, जिब्रान अली जतोई ऐं इंतज़ार हुसैन मरी ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई। तकरीब में आयल ख़ासि महिमाननि ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी सखाफ़त अज़ीम आहे। टोपी, अजरक, पटको, कुहाड़ी असांजो शान आहे। हिन चयो त सिंध जी तारीख़ 5000 साल पुराणी आहे। असीं सिंध अमड़ जा वारिस आहियूं। सिंध जी सखाफ़त खे उजागर करण लाइ ऐं अहिड़ा प्रोग्राम थियण घुरिजनि। टंड मोहम्मद खान जे ख़ानगी स्कूल में सिंधी सखाफ़ती ॾियारो वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। सखाफ़ती प्रोग्राम में स्कूल जे शागिर्दियाणियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ टेबलोज़ पेश करे सखाफ़ती प्रोग्राम खे 4 चंड लॻाए छॾिया। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां मुख़्तलिफ़ सिंधी गीतनि ते झुमरियूं पिणु हयूं वयूं। स्कूल जे प्रिंसिपल हुमानूर, शबाना मुर्क, अब्दुल बासित, आलियान शाह ऐं आरिफ कुरैशी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांखे पंहिंजे धरती ऐं सखाफ़त सां मोहबत आहे। असांखे फ़ख्र आहे त असां एतिरी पुराणी तहज़ीब जो हिसो आहियूं। उन मौक़े ते उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां आयल महिमाननि खे अजरक ऐं सिंधी टोपियुनि जा तोहफ़ा पिणु ॾिना विया। हैदराबाद में बिलाल काका जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ अलामती बुख हड़ताल कई वई। बुख हड़ताली कैंप में मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अख़बारनि बि शिरकत कई। हैदराबाद प्रेस क्लब अॻियां बिलाल काका जिदोजहद कमेटी तरफ़ां बिलाल काका जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ पीपी शहीद भुट्टो जे अख़बार काशिफ बागी जे अॻवानी में अलामती बुख हड़ताल कई वई। उन मौक़े ते पीपी शहीद भुट्टो जे अॻवान काशिफ बागी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त केतिराई महीना गुज़रण बावजूद बिलाल काका जे कातलनि खे गिरफ़्तार न कयो वियो आहे। उन मां साबित थी रहियो आहे त हैदराबाद पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में संजीदा नाहे आहे। हिन चयो त बिलाल काका हिकु समाजी सियासी कारकुन हो, हुन जो खून लोहरण न ॾिबो। आईजी सिंध समेत वसवारनि खे घुर्जे त बिलाल काका जे कातलनि में नामज़द समूरनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। ॿी सूरत में पीपी शहीद भुट्टो तरफ़ां तहरीक हलाई वेंदी। मीरपुर बठोरो में जस्कम आरेसर ग्रुप पारां इंसानी हक़नि जी भनकड़ियनि सिंध में धारियनि जी आबादकारी ऐं खंबे गुम कयल माण्हुनि जी आज़ादी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो।
जसकम आरएसआर ग्रुप जे चेयरमैन असलम खैरपुरी, अब्दुल गफूर, चांग बाबू, उस्मान मेमण ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में कारकुननि तलाउ चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सॼी सिंध में इंसानी हक़नि जी लताड़ थी रही आहे, पर रोज़ ॿियनि मुल्कनि जा माण्हू तेज़ी सां सिंध में आबाद थी रहिया आहिनि। हिननि चयो त सिंध जे बुनियादी हक़नि जे हासिलात लाइ आवाज़ बुलंद कंदड़ माण्हुनि खे खंबे गुम कयो वञे थो, जेको ज़ुल्म आहे। जसकम अॻुवाणनि इंसानी हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ इदारनि खे अपील कई त सिंध जे मसइलनि बाबति नोटिस वरितो वञे। गुलाब लगारी में पुलिस कार्रवाई करे मंशियात केस में रोपोश ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। गुलाब लगारी पुलिस मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवाइयुनि दौरान ॿिनि रोपोश जवाबदारनि अली अहमद पुट, उस्मान मक्सी ऐं हुमैर पुट शौकत खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिब कार्रवाई दौरान हिकु घुर्बल जवाबदार गफूर अधीजो फरार थियण में कामयाब थी वियो। पुलिस मूजिब जवाबदारनि वटां 500 मैनपुड़ियूं बरामद कयूं वियूं आहिनि। टिन्हिनि जवाबदारनि मथां गुलाब लगारी थाणे ते जुदा जुदा 2 केस पिणु दाख़िल कया विया आहिनि। होसड़ी वेझो टंडो फज़ल लग ॻोठ धचड़ापुर में पुलिस एहलकार शुबा खान खोसो के क़त्ल कंदड़ रूपोश जवाबदार वज़ीर अहमद खोसो के होसड़ी पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। SHO होसड़ी नेक मोहम्मद खोसो चयो त ॿिन्ही धुरियुनि में खट खणण तां तकरार थियो हो, जंहिं तां जवाबदार दुनाली बंदूक जा फायर करे पुलिस एहलकार जुमा खे क़त्ल करे फरार थी वियो हो। हिन चयो त अॼु असां ॻुझी इतलाह ते कार्रवाई करे टंडो आलिम मरी लिंक रोड तां जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। गिरफ़्तार जवाबदार जे ख़िलाफ़ होसड़ी थाणे ते मक़तूल पुलिस एहलकार जो भाउ मोहम्मद खान खोसो जे फरियाद ते केस दाख़िल थियल आहे। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट mehran.tv.tv ऐं ॾिसंदा रहो मेहरान टीवी न्यूज़। सिंध जी सुञाण सिर्फ मेहरान बनाता है तू अपना अब जहां सलाम के साथ। सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। आजकल की सूरत हाल में आप जैसे जोड़ों के लिए खानदानी मंसूबासाजी लाजमी है। तिब्बी सहूलियात सैलाब से बहुत मुतासिर हुई हैं। ऐसे में माँ और बच्चे की सेहत बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए आज के वक्त है मंसूबासाजी का। This transmission is brought to you by सरसब्ज फर्टिलाइजर्स के साथ बनाए 18 दिसंबर को किसान डे। सलाम किसान, सरसब्ज पाकिस्तान। सिंध जी सुञाण सिर्फ मेहरान। आम इतला नेरून कोट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैदराबाद पारा आम माण्हुनि जी सुध लाइ पधिरो कजे थो त गुलाम कादिर कुरैशी, वल्द अली अहमद, इम्तियाज पीरज़ादो, वल्द दीन मोहम्मद, संदस घरवारी यास्मीन जावेद, संदस भाईटे मलिक इफ्तिखार पीरज़ादो,